सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सी पोर्ट्स जो मुल्क की इकोनॉमी और ट्रेड के लिए निहायत अहम हैं। पाकिस्तान अरेबियन सी के साथ वाक़ है और इसकी कोस्ट लाइन तकरीबन 1050 किलोमीटर तवील है। पाकिस्तान के मेजर सी पोर्ट्स में कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट शामिल हैं। कराची पोर्ट सबसे पुरानी और मसरूफ सी पोर्ट है, जहां से ज्यादातर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है। पोर्ट कासिम को कराची पोर्ट पर दबाव कम करने के लिए बनाया गया और यहाँ ज्यादातर सनती सामान, तेल और भारी कार्गो हैंडल किया जाता है। गवादर पोर्ट बलूचिस्तान में वाक़या एक गहरे पानी की सी पोर्ट है, जिसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब है, जो दुनिया की अहम तेल गुजरगाह है। ये सीपेक काफी अहम हिस्सा है जो पाकिस्तान को चाइना और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। इसके अलावा पसनी, ओमाड़ा और टेकी बंदर जैसे छोटी सीपोर्ट ज्यादातर माहीगीरी और मकानी इस्तेमाल के लिए है। इस टॉपिक का पहला एमसीक्यू है, द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज। आंसर है सी, कराची पोर्ट। कराची पोर्ट इज लोकेटेड ऑन। आंसर है बी, अरेबियन सी कोस्ट। पोर्ट कासिम इज सिचुएटेड नियर। आंसर है सी, बिन कासिम टाउन। गवादर पोर्ट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? आंसर है डी, बलूचिस्तान। गवादर पोर्ट became operational in। आंसर है बी, 2007। पाकिस्तान has coastline of approximately। आंसर है C, 1050 kilometer. The coastline of Pakistan is along। आंसर है B, Arabian Sea। Karachi Port Trust was established in। आंसर है B, 1887। Port Qasim Authority was established in। आंसर है B, 1973। Gwadar Port is developed with the assistance of। आंसर है B, China। The main purpose of Gwadar Port is C, trade and strategic connectivity. Which port handles the majority of Pakistan's cargo? C, Karachi Port. Bin Qasim Port is another name for C, Port Qasim. Which port is close to Strait of Hormuz? C, Gwadar. Pakistan's ports are mainly used for B, trade and shipping. Which port is located on the Makran coast? Answer है B, Gwadar. Omara is mainly known as B, naval base. Pasni port is primarily used for B, fishing. Keti Bandar is located in B, Sindh. The main export from Pakistani ports includes C, textiles and rice. Gwadar Port is part of C, CPEC. Which port is the deepest seaport of Pakistan? C, Gwadar. Port Qasim handles mainly A, oil and bulk cargo. The strategic importance of Gwadar is due to its proximity to C, Strait of Hormuz. Karachi Port is divided into A, two docks. The two docks of Karachi Port are A, East and West Wharf. Which port was built to reduce pressure on Karachi Port? B, Port Qasim. Gwadar means A, deep water. Pakistan exports mostly through C, sea routes. Which port is nearest to Karachi city? B, Port Qasim. The coastal area of Sindh is called C, deltaic coast. The Makran coast lies in answer है C, Balochistan. The port handling LNG imports is B,
Port Qasim. The Pakistan Navy's main base is at B. Karachi. Which port is closest to China-Pakistan Economic Corridor route? Answer है B. Gwadar. Gwadar Port Phase 1 was completed in B. 2007. Which organization operates Gwadar Port? B. China Overseas Port Holding Company. Karachi Port handles about what percentage of Pakistan's trade? Answer is C. 60%. Port Qasim contributes approximately C. 30% trade. The main oil terminal of Pakistan is at C. Port Qasim. The closest port of Middle East shipping lanes is B. Gwadar. The fishing industry is strongest at D. All of these. यानी कि गवादर, कराची, पसनी. Which port has natural deep sea advantages? Answer है B. Gwadar. The coastline of Balochistan is about C. 700 km. Which port is newly developing in Pakistan? C. Gwadar. The main limitation of Karachi port is A. Depth. The port used for coal import is mainly B. Port Qasim. Which port is closest to Iran border? Answer है B. Gwadar. Pakistan's ports fall under which ministry? Answer है B. Maritime Affairs. Last one है, the strategic importance of Pakistan's ports is mainly due to. Answer है C. Global trade routes.